नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। सो टुडे वी विल बी स्पीकिंग अबाउट वन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट practice of yogic sadhana, and that particular step is called pranayam. So you all must have heard about pranayam. आप सबने सुना होगा। और हम आज we will try to understand exactly कि प्राणायाम क्या है, और जो हम ऑनलाइन या डायरेक्ट लाइव क्लासेस प्राणायाम में what you learn from us, वो भी आपको पता चल जाएगा। यू विल बी वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राणा एंड व्हाट इज आयाम। सो प्राणा इज द vital force and ayam is control. So control over your vital force or the energy is called pranayam. Now you have to understand कि suppose if you want to categorize something in the pranayam, like you want to say कि yes, this particular type of breathing is called pranayam, so we have some criteria. So if you go with the definition like pranasvedam vishesh sarvam tridiveyat pratishtitam, so it is told कि त्रिधिवेय 3 विधियों से प्रतिष्ठित होना चाहिए, या फिर महर्षि पतंजलि सेज वेरी क्लियरली कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। सो व्हाट ही सेज कि श्वास प्रश्वास एंड गति विच्छेद। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, very clearly that if something has to fall under the category of pranayam, it has to have 3 important parts, that is inhalation, exhalation and retention. तो प्राणायाम की जो विधि है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके प्रैक्टिस में इन्हलेशन यानी कि श्वास लेना, श्वास प्रश्वास और कुंभक, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक कुंभक हो, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप नहीं कह सकते कि वो प्राणायाम में आता है। तो देन बिकॉज वी ऑल नो दैट प्राणायाम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ योगिक साधना, और एवरीबडी इज़ लर्निंग, टीचिंग, so many things are happening in this field. So we have to understand where we have to start. कैसे शुरू करें, how to start, how to train our lungs for the higher practices of pranayam. Then what are the pranayamas which easily anybody can do. मतलब everything you cannot practice, like प्लावनी है, केवली कुंभक है, प्रावनी, ये चीज़ें जनरली यू नीड लॉट ऑफ प्रिकॉशंस इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इट, राइट। तो सपोज यू वांट टू प्रैक्टिस प्राणायाम, सो व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू फॉलो। सो द फर्स्ट थिंग इज you have to understand one thing, that pranayam as a practice, it is more and more effective than asanas. So if you do asanas if your practice of asanas is like if you are not able to do it correctly, so what will happen? Nothing will happen actually. Maximum what can happen is your one part of the body which is more flexible can be more happy, and other part will be little sore. That only can happen. But if you do wrong practice of pranayam,
So you have to understand very clearly कि you may develop a lot of problems. So you have to understand, you have to maintain mainly in all the pranayamas, you have to maintain all the panch pranas. So first you have to understand what are these panch pranas. So let us divide this pranas into 5 parts. So the first part, the grossest prana, which is called pran vayu, it is going to control your heart and lungs, that area. Then pran, then saman is your middle, and the upper abdomen is your pran vayu. Apan vayu is your lower abdomen. Your genitourinary system is controlled by apan vayu. Udvan vayu is your head and neck. So the brain and neck area is controlled by udvan vayu. And the Vyan Vayu is present throughout your body, and it is the subtlest of all the pranas. So it is present throughout the body, and its normal flow is very important for the normal health of the whole body. So whatever pranayamas we are doing, whatever practices we are doing, it is only to maintain these things in a proper balanced flow. तो आपको ये समझना है कि प्राणवायु हो, चाहे उदान हो, चाहे समान हो, चाहे अपान हो, चाहे व्यान हो, उदान हो, ये सारे वायुस जब तक आपके शरीर में बैलेंस नहीं रहते हैं, जैसे आपके पेट में कुछ तकलीफ़ है तो आपका समान वायु इम्बैलेंस है, आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में आपके पेशाब करने में या फिर जेनाइटल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका अपान वायु, आपके हार्ट लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो नेचुरली प्राण वायु, सिर में कुछ तकलीफ़ है, गर्दन में कुछ तकलीफ़ है तो उदान वायु, या जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो व्यान वायु। इस तरह से पूरे शरीर को डिवाइड किया गया। अब आप ये समझिए कि आपको प्राणायाम करना है तो ऐसे प्राणायामों को करना ज़रूरी है जो आपके इन पंच प्राणों को बैलेंस करें, ठीक है। सो टू बैलेंस दिस पंच प्राणास यू हैव टू प्रैक्टिस। Now what you are going to practice? पंच प्राणास को बैलेंस करने के लिए द फर्स्ट थिंग what we do is sectional breathing. So sectional breathing, here abdominal breathing, thoracic and clavicular breathing is taught, and then combined all the three we do the full yogic breathing, so that completes your sectional breathing. So the practical you will find in my other videos. आपको और वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें आपको सेक्शनल ब्रीदिंग के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो आप पहले सेक्शनल ब्रीदिंग कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन, इफ़ यू नो यू डू इट, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। नाउ देन कम्स द नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या काम है? नाड़ी शोधन प्राणायाम, इट बैलेंसेस योर होल 72,000 नाड़ीज, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अगेन it has to be done in a proper way. You have to learn it proper from a trained person, mainly preferably a physician, right? Then what exactly do in Nadi Shodhan? Nadi Shodhan pranayama, you start from the left nostril, inhale from the left, exhale from the right, then inhale from the right and exhale from the left. This is Nadi Shodhan pranayama. Then Surya Bhedan, you inhale from the right, exhale from the left. Chand Bhedan, inhale from the left and exhale from the right. Then Shitali, so you have to make tube of your tongue like this. And then exhale from the left nostril. Sitkari, Sitkari is clenching of the tongue in between your teeth like this. Then exhale from the left nostril. Then Sitkari, after that Sadanta. So you have to touch the tip of your tongue to the soft palate on the top and then breathe from the mouth like that. So these are the different practices which we do in yogic sadhana. Now we have to understand certain important things, like there is a practice called Bhastrika. Now Bhastrika is a king of all the pranayamas, you can say, because you have to inhale deeply and exhale forcefully, in active inhalation and forceful exhalation. तो भस्त्रिका को सारे प्राणायामों का राजा कहा गया है, because it cleanses all the 72,000 nadis, balances your nervous system, and all it has got effect over all your system.
द प्रैक्टिस ऑफ भस्त्रिका हैज़ टू बी लर्न प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी होगी भी नहीं। तो यू टू अंडरस्टैंड कि भस्त्रिका को आप सही तरीके से कीजिए, सीख के कीजिए। नाउ ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव फॉर्मुलेटेड ए कोर्स बेसिक एंड एडवांस। नाउ बेसिक कोर्स में व्हाट वी टीच इज़ नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, देन सूर्य भेदन, सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र भेदन, चंद्र अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी. So this all the pranayamas are taught in the basic level, and the proper ratio like 1:1:2, then 1:2:2, and 1:3:2. These are the basic practices which we teach in the basic level. Because it is very important, unless and until you do it in a proper way, then according to your health condition, अगर आपको कोई बीमारी है तो उस हिसाब से प्राणायाम का सीक्वेंस चेंज होगा, सभी चीज़ें आप नहीं कर सकते. Then advanced में what we do is we teach you up to 1:5:2, 1:6:2, like that. That is your kumbhak, inhalation, kumbhak and retention. After that, we teach you a breathing exercise with the Laya Yoga. The practicals of this all the pranayamas are already shared in my YouTube videos. तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. You can find out and you can practice it. But if you want to learn it directly from me, because I have been teaching yogic practices from last 25-30 years now. I am doing it from last 30 years, and after that I started teaching it, and many people, like thousands of people, have got the benefit. So what you learn in this particular series is this basic and advanced, followed with chakra meditation also will be teaching you. So what I feel is, if you are serious about your sadhanas, because asanas are very important, but pranayamas are very very important, because today आज के ज़माने में हर कोई प्राणायाम सिखा रहा है, बट सही सीक्वेंस में ना तो खुद प्रैक्टिस है ना सिखाने का काम है. तो what we do is, because I am a yoga and naturopathy physician, a registered yoga and naturopathy physician, and I did my BNYS from SDM College, completed in 2000. So you can understand कि it's such a long experience behind me. And because I was doing yoga from before joining the course, so it has got almost 30-35 years of experience. So suppose you want to understand what it is, you can join the course. You want to practice it, you can follow the videos. If you have the doubt, you can ask me. So I think in a gist, I have told you what exactly is pranayam, how it is supposed to be done. And there is one important thing, that all the pranayamas cannot be practiced throughout the year. So cooling pranayamas you have to do in the summer, and heating pranayamas you have to do in the winters. Nadi Shodhan pranayam you can do throughout the year. So you have to be very careful that you choose the pranayama correctly according to your age, according to the weather, according to your health condition also. You cannot practice everything throughout your life. So I hope I have given you a very clear picture about the practice of pranayamas. अगर आपको और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए हो, या कुछ भी प्राणायाम या योग से संबंधित कोई भी चीज़ हो, so you can definitely ask me, because along with the traditional yogic practice, I have the experience of a medical background of pranayamas and asanas, almost all yogic practices. So अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.